Okay, students, mute all. Let us concentrate here. हाँ, मैंने आज रिमूव कर देना है जो अनम्यूट होगा क्लास में से. ओके, फर्स्ट टर्न इज योर्स. Now quite everyone. Okay, students, we were doing properties of air. First property we had discussed. बच्चे, am I audible? Mute है तू. हाँ जी, thank you so much बच्चे getting the messages. Thank you. Okay, students, first of all, आपका revision test is on Saturday. First revision test. Okay. Next Saturday, your first revision test is there. 4 chapters are there. Hopefully, everyone is clear with this. Right? So, अभी भी जो 1-2 बच्चे रहते हैं सब्जेक्ट एनरिचमेंट वाले या प्रैक्टिकल फाइल्स वाले, प्लीज भेज दो. प्लीज सेंड इट. ओके ओके स्टूडेंट्स, let us move back to revision of lesson 15. Lesson 15 we were doing properties of air, right? First property that we did was air occupies space, that we proved yesterday. Okay, then next property is air has weight or air has mass. So who will prove this? Air has weight. You are still muted. Air has weight. Yes, Kanishk, unmute. Yuvraj, call me today after the class in the evening. Yuvraj. Improvised form, sit down. Arjun. Yes, students, what we have to do to prove? Take a stick, tie a thread in the middle. Now tie one inflated and one deflated balloon on the ends. Right? We have tied it. ये inflated balloon and this is deflated. Now what we will see? The stick will tilt like this. Right? Why? Because the inflated balloon is heavy than the deflated balloon. Why it is heavy? Because it has air inside it, which makes it heavier. This show air has weight. Right? Hopefully it is clear to all. Now students, coming to next activity, our next property is air supports combustion. Air supports combustion. Can anybody explain? Anyone else? Burning. Meaning of combustion is burning.
Anyone else? Yes, Pranav. Unmute Pranav. You are also muted. Will stop burning. Right? But it needs improvisation. Jashan, mute, unmute. First of all, congratulations. आपकी मैंने फोटो देखी on the Facebook. Good. What was that achievement? Ball throw. He got third at state level. Congratulations. Very good. Okay. Yes, start the activity. Arjun. Why then prove नहीं हुआ ये? Prove नहीं हुआ, तुमने demonstrate कर दिया. Okay. Chalo, mute. Harshia, would you like to improvise it? Quiet. Harshia. मैम यस मैम एक्टिविटी है कि टेक 2 candles of same length, place them on the table, then light both the candles. Now cover one of the candle with a glass tumbler, and after some time we will observe that the candle which is covered get extinguished. This is because the component inside of the glass tumbler which supports burning was limited, and that component is used up by the burning candle, and the other candle getting continued supply of air. This component of air which supports burning is oxygen. There's the other which is not covered, it is getting continuous supply of oxygen. Right, very right, well explained. Yes, student, what she has said. Take 2 candles. Let me take it. Take 2 burning candles. Right. Now, invert a tumbler over the one candle. Right. After some time, we will observe this candle stops burning. Why this happen? आप लोग यहाँ तक demonstrate करते हो, इसके आगे नहीं करते. Why it stops burning? Because क्या? हाँ, right. Because this glass tumbler, it will cut off the supply of air. So because it is not getting any air, it will stop burning. Why after some time, whatever air was present in the tumbler, it get used up on burning. When it get used up, it stops burning. While this continues burning as it is still having the supply of air. अभी हमने प्रूव नहीं किया ना कि ऑक्सीजन ही होती है. बिल्कुल. Okay जी, hope it is clear to all. Now next is number 4. Air exerts pressure. Who will prove this? Air exerts pressure.
Anybody? Bani here. Bani wants to speak. Yes, Bani. Yes, ma'am. Hmm. We will take one bottle, empty bottle, and we will push it inverted in a bucket, and it will not burst. Tilt it some, It and shows the air bubbles will occupies come out. space, Bunny. It shows air occupies space, right? This activity is showing air occupies space. Any other child? Yes, Kanishk. हाँ? Why? बच्चे इसकी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं. सिट डाउन. फर्स्ट जो ये कहना चाह रहा था, एक तो ये है सात्विक, टेक अ बलून, fill it with air, continue filling it. At one moment it will burst. Why it will burst? Because the air present inside it will exert pressure on the walls of the balloon. Due to that pressure it will burst. Number 2, अगर आपको दूसरी बतानी है, take a glass, fill it with water, put a cardboard over it, a piece of cardboard. Now apply pressure on the piece of cardboard. Now invert it upside down. Now apply pressure for some time. Then remove your hand and cardboard slowly. You will see water will not come out. Why? Because the pressure is exerted from the air upwards. Okay, right. एक और है, when you fly the kite against the direction of the wind, it is very difficult. Why? Because air is exerting pressure on it and you are not able to fly. In the same way, when you try to cycle, to ride on a cycle opposite to the direction of wind, you won't be able to, because air is exerting pressure on you, so you won't be able to pedal it. It takes lot of effort from your side. You need to overcome the air pressure. तभी आप चला पाते हो. एक और एग्जांपल है, take a tin can, fill it with water, right? Heat it. When it starts boiling, cover the tin can and gas बंद कर दो. Now take the tin can, put it under the water, cold water. You will see that tin can is crushed. Why? Because when you were boiling it, steam was produced. That steam pushed the air out. As soon as it starts boiling completely, you immediately put the cover on the tin, right? Now inside क्या है? Steam. Now you close the gas. Then you put it under the cold water. This cold water, when you pour it on the tin can, the steam, it gets converted into water. Now no more vapor, now no more gas is there. Air तो पहले एक्सपेल कर दी हमने, तो बाहर का जो एयर प्रेशर है वो उस टिन कैन को क्रश कर देता है. Right. Is that clear? Is that clear to all? Air exert pressure is clear? Thank you. Hope these all are clear to all. Now coming to next topic. Next topic is, we will be doing oxygen cycle today. What is the use of oxygen? Bilkul, everybody will draw the oxygen cycle. The copies that I am checking, you people are having mistakes.
right? So draw it. Today I will show you again how to draw it in an easy way. Why you are here in the school? आप declaration form लेके आए हो ना? And you are not even wearing the mask. Go to medical room first. नहीं, बच्चे please medical room. अभी अभी घर जाओ. Please go to medical room and talk to her. बलबीर मैम से बात कीजिए, उनको बोलो मुझे कोल्ड हुआ है, प्लीज. बच्चे आप डेक्लेरेशन फॉर्म साइन करके आते हो, उसमें लिखा होता है कि यू आर नॉट सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड फीवर. वेट वेट, yes students, shall I start? Please, it is my humble request to offline students, those who are not feeling well, please take rest at home because you people signed the declaration form. Okay students, let us start. How do we have to start? Oxygen is present in the atmosphere. Then this oxygen is used for two purposes. कौन-कौन से हैं? One is hold on. Yes, students. So two major roles are performed by oxygen. One is respiration and another is combustion. Respiration. So who is doing respiration? Plants and animals. Both are using it. And combustion, fuels. Burning तो वही होती है. अब combustion का बाई प्रोडक्ट क्या है? After combustion, what is released? Carbon dioxide, water. Right? In the same way, the byproduct of respiration is water. कंबस्टन से कार्बन डाइऑक्साइड की सिंथेसिस होती है और रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की. तभी मैंने कंबस्टन के बाद सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड पे एरो लगाया. राइट? इज दैट क्लियर? देन दिस कार्बन डाइऑक्साइड is used up by plants for the process of photosynthesis. Now, after the photosynthesis is done, oxygen is released in the atmosphere again by product. Hope it is clear to all. This is oxygen cycle. I guess everybody is making it. Make it. Done. Sit on your seats. Don't come to me. हाँ जी. बच्चे, don't exchange things.
We have already told, no बच्चे, we have already told you not to exchange the things. Hurry up, draw it. After that, we will be drawing nitrogen cycle. I will tell you the easy method today. How to learn. Because in your copies, so many of you have drawn wrong. Satvik, बच्चे आपको थोड़ी आईसाइट की प्रॉब्लम लग रही है? कंसल्ट द डॉक्टर. मुझे लग रहा है 2-3 दिन से आपको बोर्ड क्लियर नहीं नजर आ रहा. Please tell your parents to show your eyes to the doctor. Then why you are not wearing the specs? Wear it. ऐसे ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी बेटा, नंबर बढ़ जाएगा. Wear the specs. हाँ जी, पता नहीं बेटा क्या करते हैं. डिक्लेरेशन फॉर्म बेटा वो मैम के पास गए है ना, इसीलिए भेजा है. हो सकता है छोटा मोटा कुछ हो, बट हमें तो थोड़ी प्रिकॉशन लेनी है ना. हाँ, मतलब कई बार वैसे ही थोड़ी सर्दी बाहर घूमने से हो जाती है. इट्स ओके. जरूरी नहीं है कोल्ड का मीनिंग कोरोना ही है. ये हम सब देख चुके हैं. पूरा साल हम थोड़ा थोड़ा बीमार हुए हैं, किसी को फीवर, किसी को कुछ, बट इट डजंट मीन कि हम कोरोना पॉजिटिव हो गए. कुछ भी नहीं. Hurry up. Okay. If it is done, so shall I erase this? We will be starting with nitrogen cycle. Natik, wear your mask. Please don't remove it. Any of you. Wear the mask. You also, Satvik. बेटा थोड़ा सा कर लो. कौन? तो बैग लेने आए हो आप रिसेप्शन पे? मैम से मिलके आए, प्रिंसिपल मैम से? बच्चे, टेक प्रॉपर रेस्ट बिफोर कमिंग टू स्कूल. गो फॉर ऑनलाइन क्लासेस. ठीक है? डोंट कम टू स्कूल इफ यू आर नॉट वेल. जितना भी. हाँ, तो फिर आपको पूरी तरह ठीक होके आना चाहिए था. अब भी नहीं बेटा, नहीं, अच्छा नहीं. थोड़े दिन, 7-8 दिन, 10 दिन रेस्ट ले लो. ओके, उसके बाद आप and bring the fitness form, declaration form, that you are fit. We will submit again. हाँ जी, I am going to erase this. Let us start with the nitrogen cycle. हाँ जी, चलिए, let us start. Easy method I am going to tell you. भूलना नहीं है नाइट्रोजन साइकिल. पहले देख लो कैसे बनाना है. प्लीज सी. स्टार्ट करें. पेंसिल्स रेडी? कॉपीज टर्न कर लो, सीधे नहीं बनेगा. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल, मेक 3 boxes. Make 3 boxes in the upper line. Then make 3 boxes below it. इस तरह से 3 boxes और बनाने हैं हमने. Like this, बिल्कुल उसके नीचे. Make 3 more boxes. Right? Hurry up, without scale पहले बना लो, बाद में उसको अच्छे से बनाना. अर्जुन, it will take more time now. Draw it everybody, hurry up. उसके बाद देखना है हमने क्या करना है. हाँ जी स्टूडेंट्स, now see, pay attention.
नैतिक, पे अटेंशन नाउ। सात्विक, मैंने बोला स्केल छोड़ दो, हाथ नहीं उठाना अब, एरो, बस शुरू हो जाओ। बन गया? एरोस गलत नहीं होने चाहिए, इस तरह से लगा लो। डन? अब क्या करना है? एक, यहां पे हमने एरोस बंद किए थे ना, अब यहां से भी हाथ नहीं उठाना, यहां पे आ जाना है। आ गए? अब यहां से भी हाथ नहीं उठाना, यहां पे आ जाना है। अब यहां से यहां पे आ जाना है। Got it? एरोस बन गए? नैतिक, क्लियर? इसमें ऐसा करेंगे तो हमारी एरोस की कोई गलती नहीं होगी, और एरोस की छोटी सी गलती के भी नंबर कटते हैं, राइट? अब हमने सिर्फ फिलिंग करनी है। बैटर तैयार हो गया, नाउ वी हैव टू फिल इट इन द टोस्ट। व्हाट? पहला बॉक्स H2O, N2 इन एटमॉस्फेयर, यहां से गई प्लांट्स के पास, प्लांट से एनिमल्स के पास, एनिमल्स ने बनाई अमोनिया, अमोनिया से बनी नाइट्राइट्स, नाइट्राइट से बने नाइट्रेट्स, अब नाइट्रेट से फिर से बनी नाइट्रोजन, इसको बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। ये एरो देखो, मेरा डीनाइट्रिफिकेशन वाला एरो ऊपर को जा रहा है, वो तो नीचे को आ रही है। फिजिकल फिक्सेशन क्या है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है नाइट्रेट्स बनाती है डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ लाइटनिंग, राइट? उसको बोलते हैं फिजिकल फिक्सेशन। अब जो नाइट्रोजन बनाई प्लांट्स ने विद द हेल्प ऑफ प्लांट्स में से एनिमल्स के पास कैसे गई? नो, न्यूट्रिशन। एनिमल्स ने खाना खाने के बाद क्या किया? एक्सक्रीट, डेथ, डिके। सेम प्लांट्स भी करते हैं, वो भी एक्सक्रीट करते हैं, डेथ डिके होती है। प्रोसेस को बोलते हैं अमोनिया बनने के प्रोसेस को बोलते हैं अमोनिफिकेशन। अब अमोनिया से नाइट्राइट्स बने नाइट्रिफिकेशन। नाइट्राइट्स किसी काम के नहीं है, इनको बदलना पड़ेगा नाइट्रेट्स में। अगेन प्रोसेस इज नाइट्रिफिकेशन। अब नाइट्रेट्स जो है ये प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, चले नाइट्रेट एसिमिलेशन। व्हाट डू वी कॉल इट? खत्म हो गया जी। इजी है ये।
चलिए करिए, डू इट। हाँ जी बना लो। क्यों आप बनाइए, बच्चे बना रहे हैं मेरे। क्वाइट, एवरीबॉडी क्वाइट। Hurry up, draw it. Few minutes are left. Till then, finish it. हाँ जी। Any doubt? Next period is settle. Hurry up, students. Draw it.